हेलो बच्चों, दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेशन फॉर योर EMF and terminal potential difference. What you can see here is a very simple electrical circuit in which I have a battery, a key and a simple rheostat. एक resistance है which I can vary. Now, as you know that voltage across the two terminals of the cell when no current is drawn from the cell is the EMF. मैं आपको शो करता हूं कैसे. Now these are the two terminals of the cell. This is the positive terminal, this is the negative terminal. Here is the key. The key is open. There is no current flowing through it. Even if it is switched on, there is no current. Now let's measure the EMF of the cell. I have a multimeter with me. Positive, negative. Right now the EMF of a cell you can see is 9.13, 9.1 something, around 9 volt. So this is the EMF of cell. Now as soon as I turn on the current means मैं इसको बंद कर देता हूं. Key is closed. You can see a sudden drop. Now the EMF, the voltage becomes 7.4 something. This is the terminal potential difference. जब करंट नहीं था, when there was the open circuit, तब जो वोल्टेज थी which was 9 point something, that was the EMF of the cell. जैसे ही मैंने सर्किट को स्विच ऑन किया, करंट फ्लो हुआ, इंटरनल वोल्टेज में कुछ ड्रॉप आया and the voltage now becomes 7.4 something. That is the terminal potential difference of the cell. Look once again. Now right now the current is flowing. The voltage across the cell is 7.42. You can see as soon as I take out the key, there is no current, the voltage becomes 9 point something. So that is 9 point something is the EMF. जब internal resistance में there is no voltage drop, the voltage is solely across the cell, that is the EMF. जैसे ही internal resistance में current drop होता है, जैसे ही आप current internal resistance में voltage drop होता है, आप देखोगे कि overall voltage which the cell supplies reduces. So that is your terminal potential difference. Now, what happens if I increase the external resistance? अगर मैं इस पहले theoretically अगर हम इस external resistance को बढ़ा दें, this is a rheostat. Rheostat is a variable resistor. You can increase this resistance. अगर मैं इस resistance को increase कर देता हूं, जैसे इस resistance को increase करूंगा, सर्किट का करंट कम हो जाएगा, I reduce हो जाएगा. I reduce होगा, जब I reduce होगा तो IR reduce हो जाएगा. I into small r, that is the internal resistance. So I अगर reduce होगा तो voltage drop inside reduces. So terminal potential difference must increase. अभी आप देखिए 7.5 something है, इसको बढ़ाते हैं. आप देखो वोल्टेज बढ़ती जा रही है ना, यही बोला मैंने. जब आपने रियोस्टैट को बढ़ाया, वोल्टेज इंक्रीज होती जाएगी. इसकी क्यों वोल्टेज इंक्रीज होगी? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बढ़ेगा? कैपिटल आर बढ़ा, दैट इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. कैपिटल आर बढ़ा तो ओवरऑल सर्किट का करंट रिड्यूस होगा. आई रिड्यूस होगा तो आई आर रिड्यूस होगा. आई आर रिड्यूस होगा तो वी बढ़ जाएगा. सो योर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीज. दिस इज व्हाट आई एम शोइंग. आप इसको कम कर दो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अब कम हो जाएगा. समझ में आ गई बात? क्लियर? सो अब अगेन देखिए, स्विच इसको ऑफ कर देते हैं. जैसे ये ऑन ऑफ किया, 9 पॉइंट समथिंग वापस हो गई. क्लियर? सो दिस इज योर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF ऑफ अ सेल. थैंक यू वेरी मच.